हाय फ्रेंड्स, मारी चेनल में आप सौનું स्वागत है। आज आप बनावीशुं पंजाबी शाकनी ग्रेवी जे तमे 8-10 दिवस माटे स्टोर करी सको छो। तेमां आपणे लईशुं 8 मीडियम साइजना टमेटा, 2 मोटी डूंगरी, 4 करी लसणनी, 1 लीलू मरचुं, 2 लाल मरचा, 10 થી 12 काजू अने 1 वाटकी दही। तो चलो ग्रेवी बनाववानी शरूआत करीए। तो सौ प्रथम आपणे एक बाउल लईशुं। एक बाउल में 2 चमची लाल मरचुं पाउडर, 2 चमची धाणा जीरुं पाउडर, अर्धी चमची हळदर अने 3 चमची दही एड करी देशुं। पछी तेने आपणे सरखी रीतना मिक्स करी लेशुं। मसालो तेमां सरखी रीतना मिक्स थई जाय पछी तेमां अर्धी चमची घी एड करशुं। पछी तेने पण सरखी रीतना मिक्स करी लेशुं। सरखुं मिक्स थई जाय पछी ते बाउलने थोड़ी वार बाजुमां राखी देशुं। तो हवे आपणा वेजिटेबल्स बधा कट थई गया छे। तो हवे आपणे ग्रेवी माटेनो वघार करीए। तेमां आपणे एक कढ़ाई में 2 चमची घी लेवानुं छे। घी थोड़ुं गरम थाय पछी तेमां 1 तमालपत्र, 5 लविंग, 2 इलायची अने 1 तजनो टुकड़ो उमेरी लेशुं। त्यारबाद तेमां आपणे तीखी मरची लीधी छे ते एड करी देशुं, लसण एड करी देशुं अने लाल सूकું मरचुं लीधुं छे ते एड करी देशुं। तेने थोड़ीवार आपणे फ्राय थवा देशुं। थोड़ीवार फ्राय थई जाय पछी तेमां आपणे स्लाइस करेली डूंगरी एड करी देशुं। डूंगरी एड कर्या पछी तेने आपणे गोल्डन ब्राउन थाय त्यां सुधी पकावीशुं। हवे जोई शको छो के आपणी डूंगरी थोड़ीक ब्राउन थई गई छे। आ तेमां आपणे तैयार करेलुं बाउलमां मसालावाळुं दही एड करी देशुं। तेने आपणे एक ज सरखुं हलाववानुं छे जेथी करीने दही फाटी ना जाय। तेने आपणे 1 કે 2 मिनिट माटे चढ़वा देशुं। त्यारबाद तेमां आपणे काजू एड करी देशुं। पछी तेमां टमेटा एड करी देशुं। ते बंने एड थई जाय पछी तेने सरखी रीतना मिक्स करी देशुं। पछी तेमां स्वाद अनुसार मीठुं नाखी देशुं। त्यारबाद तेमां 1 ग्लास पाणी एड करवानो छे। ते एड थई गया पछी तेने आपणे 10 मिनिट माटे कूक थवा देवानुं छे। कूक थती वखते वच्चे वच्चे आपणे थोड़ी वारे આવી રીતના તેને મિક્સ કરતું રહેવાનું છે જેથી કરીને નીચે મસાલો કે ટમેટા નીચે બેસી ના જાય। હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા ટમેટા એકદમ સરસ રીતના કૂક થઈ ગયા છે। તો તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। પછી તેમાં આપણે જે ખરા મસાલા એડ કર્યા છે તે બધા કાઢી લઈશું જેથી કરીને તે પીસવામાં રહી ના જાય અને તે મોઢામાં ના આવે। ત્યારબાદ તેને મિક્સરની જારમાં કાઢી તેને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેવાનું છે। હવે ક્રશ કરી લીધા બાદ આપણી ગ્રેવી એકદમ રેડી છે। આ ગ્રેવીને તમે 4-5 દિવસ માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ઇન્સ્ટન્ટ અને જલ્દીથી તમારું પંજાબી શાક પણ બની જશે। મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ કરીને જરૂર કહેજો। થેન્ક યુ।